Thank you for joining us today, sir. Mr. Akshay Khurana, Managing Partner, Ranch Catering. Chef Abhishek Mishra, Executive Chef, Seasons Group. And Saurish ji will be moderating the session. Saurish ji, please take it forward. We'll need a few more mics, I think. I'll just get Okay, may I request all of you to please come and sit down in the front. You know, I know the tea and coffee has been very good and the service has been excellent. All thanks to Seasons Catering. And we've got the Chef Mishra with us. Can we have some people sitting? You know, your tea and coffee will be served at your at the place where you're sitting. You know. Okay. Well, you know, we keep talking about a lot of things in our IHC conclave, and we are thankful to Mr. Sanjay Khullar for, you know, raising the issue of catering. You know, and of course we've got Akshay Khurana was here last time also, and we've got Mr. Dang and the Chef Abhishek. So we've got different perspectives from hotel catering to institutional catering to event catering. There's so many. Catering itself has become like a sum of different verticals. So what we heard, what we discussed last time was very different from what we are going to discuss now. Last time it was we were speaking in the shadow of COVID. You know, we were between the second and the third waves. You know, and a lot of you were talking about a lot of the new opportunities that came up, and also how COVID redefined your business. You know, how your business changed, your business models changed, and how you had to pivot on new things to start to keep your business alive and going. You know, so that was the discussion last time. But now, thankfully, COVID is behind us. You know, and we are looking forward with a lot of enthusiasm and optimism. And so the big question today is, marriages are back, you know, events are back, you know. So Mr. Dang, I'll start with you, you know, because you you have your own hotels and you also have a big catering business. Do you think, hotel catering is seeing a revival? Last 2 years they were badly affected because the number of, the restrictions on the number of people who could come for functions. Are you seeing a major revival in hotel catering, and what kind of, events are coming back to hotels? Mr. Dang? Hello. Yeah. नमस्ते एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूँ। मैं 7 सीज हॉस्पिटलिटी की तरफ से, मेरा नाम रमेश डैंग है और 95 से इस बिजनेस में हम जैसे जुड़े हैं केटरिंग से, और 2000 में हमने रिजोरी गार्डन में एक बैंक्वेट हॉल की रेंट पे जगह लेके हमने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले हमारे काम करने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती थी कि 2001 से जैसे हमने काम स्टार्ट किया, अगर पहले साल में अगर हमने 10 करोड़ का काम किया तो नेक्स्ट ईयर में हम 12 करोड़ का काम करते थे, नेक्स्ट में 18 करोड़ का काम करते थे। ऐसे हमारी स्पीड अपनी वर्किंग की इतनी हाई एंड थी कि हम सोचते थे कि कितना काम कर लें हम, हमारे लिए 24 आवर्स भी कम पड़ते थे। उसके बाद हमने 2004 में 8000 गज में एक बैंक्वेट हॉल लॉरेंस रोड पे बनाया था। सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल दिल्ली का हमने बनाया था और उसमें बड़ा अच्छा हमने एक सिस्टम
क्रिएट किया था, एक सबसे बड़ा बिग बैंक्वेट हॉल, बिग गैदरिंग। आप ये देखिए कि 2004 में जब हमने अपनी ही लैंड लेके जिसको स्टार्ट किया था, और 2007 में हमने 2008 में हमने 5 स्टार होटल की प्रॉपर्टी ली पीतमपुरा एरिया में। आप स्पीड देख सकते हैं कि 4 साल के अंदर ही 5 स्टार की प्रॉपर्टी ली, और 2010 में हमने बनाना शुरू किया, और 2016 में एक 5 स्टार होटल, लग्जरी 5 स्टार होटल दिल्ली में हमने तैयार किया, जो कि आप मौर्य की टक्कर का कह सकते हो। आपने अगर कभी हमारे यहाँ होटल में आए नहीं होंगे, लग्जरी हमने प्रॉपर्टी बनाई है, जिसमें F&B का पार्ट सबसे जा रहा है। 3000 लोगों की इसमें हम गैदरिंग का काम कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि 2016 तक हमारी स्पीड इतनी अच्छी थी कि पहले अगर 10 करोड़ की सेल करते थे, फिर 15 की करते थे, फिर 20 की करते थे, और पिछले 4-5 साल से आज हम वहीं रुके हुए हैं कि सेल को हम बढ़ा नहीं पा रहे। बल्कि पैंडेमिक में तो हमने लॉस ही कवर किया, लॉस ही मतलब हमने किया, और आज हमारे पास सब लोगों के लिए बहुत दिक्कत से हम लोग सब निकल रहे हैं। थोड़ा सा पीरियड अब अच्छा आना शुरू हो गया है वैसे लास्ट 4 मंथ से, लेकिन हमें सब लोगों को मिलकर प्लानिंग करनी चाहिए कि हम इसको किस तरीके से बेटर करें। क्योंकि पहले गैदरिंग जो शादियों में या और भी गैदरिंग जो भी होती थी, वो 400-500 से नहीं होती थी, 2-2 हज़ार तक 5-5 हज़ार लोगों के काम करते थे। जो गैदरिंग आज 500 to 700 सोशल में आ गई है, कॉर्पोरेट के काम कम हो गए हैं, और जो आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हमें अब अपने सिस्टम को थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा। अगर हम बैंक्वेट हॉल की तरफ से जाएं तो आज बैंक्वेट हॉल में 95% दिल्ली NCR में जितने बैंक्वेट हॉल हैं रेंट पे हैं। मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, दिल्ली बैंक्वेट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूं। तो आज लोग सब दिक्कत में चल रहे हैं। रेंट, किसी को रेंट देने की दिक्कत है, और किसी का बैंक्वेट हॉल है तो उसको बैंक के साथ प्रॉब्लम है। तो इस मुश्किल हालात में हर लोगों को निकलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो हमें कुछ ये एक तो ये सोचना चाहिए, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हमें एक तो ये सोचना चाहिए आज अगर गैदरिंग किसी की 500 की है, वो 300, 400 बुकिंग कराते हैं लोग, और 500, 600 लोग खाना खा के चले जाते हैं। लेकिन हमें पेमेंट जो है प्लेटें इतनी कम लगती हैं, 400 से कम ही लगती हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस का रीज़न रह जाता है। इसके लिए हमें एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा सबको, कि बजाय प्लेट काउंट करने के हमें पर पर्सन काउंट करना चाहिए। क्योंकि जब गैदरिंग की 600 लोग आए हैं, आज फूड की कैपेसिटी लोगों की थोड़ी सी कम हो गई है। स्नैक्स हम लोग इतना ज़्यादा खिला देते हैं, चाट की आइटमें खिला देते हैं, नॉन वेज स्नैक खिला देते हैं, लोग प्लेट की तरफ जाते नहीं हैं, जो हमें उसका लॉस खाना पड़ता है। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म से सब बात आपस में करेंगे कि हम प्लेट काउंट की बजाय पर हेड काउंट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारा बिलिंग का सिस्टम 25% तो कम से कम बढ़ ही जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारी आज ऐसी आ गई हैं कि आज हमारे लोगों का आपस में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। जो किसी टाइम में हम 1000 रुपये 1200 रुपये में काम करते थे, और आज उसी को आज से अगर 8 साल पहले जाते हैं तो आज हमारा रेट 2200-2500 रुपये बैंक्वेट हॉल में होना चाहिए, जो 1200 से 1500 पर हेड के हिसाब से लोग 1000 रुपये में भी कर रहे हैं, 900 में भी कर रहे हैं। तो हम आपस में कंपटीशन ना करके हमें मिलके काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, गेस्ट को जितना मर्जी बेनिफिट आप दे दीजिए, गेस्ट तो बेनिफिट लेके चला जाएगा, आखिर नुकसान हमारी इंडस्ट्री को उठाना पड़ता है, हमारे स्टाफ को उठाना पड़ता है। जब बैंक्वेट हॉल इंडस्ट्री या ओनर के पास इतना ज़्यादा ढंग से पैसा नहीं आएगा तो स्टाफ भी दिक्कत में आएगा। तो हमें चाहिए कि हर चीज़ की प्लानिंग मिलके करनी चाहिए। क्योंकि आज दिल्ली NCR में मैरिज का या कॉर्पोरेट का काम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, लेकिन हमारे अभी सिस्टम में हम ठीक नहीं है बिल्कुल भी। पहले सिस्टम में लोग क्या होते थे कि प्लेट खाने की जरूर उठाते थे, स्नैक्स कम होते थे, आइटमें कम होती थी, और प्लेट काउंटिंग में हम प्रॉपर एक बिलिंग ले लेते थे, जो आज हम नहीं ले पा रहे। तो ऐसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, जितने मर्जी आप ऐड करते जाइए। गवर्नमेंट को हमने इतना ज़्यादा टैक्स दिया आज तक, इतना GST दिया, इनकम टैक्स दिया या PF दिया, जितना भी बहुत कुछ हमारी तरफ से गया, लेकिन पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने हमें किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी,
ना इलेक्ट्रिक में दी, ना लोगों के लिए कुछ दी, ना कोई इंटरेस्ट में दी। आज गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट टैक्स लेना चाहते हैं, चाहे वो हाउस टैक्स है। हाउस टैक्स आज देखो बैंक्वेट हॉल में 4 का पहले चल रहा था, 10 की कैटेगरी में लेना चाहते हैं। तो कहने का मतलब आज आपके पास इनकम तो आ नहीं रही, लेकिन गवर्नमेंट सब तरह से टैक्स लेना चाहती है, चाहे वो एमसीडी है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। किसी न किसी तरीके से हमने 5 स्टार होटल बनाया है, तो डीपीसीसी ने 5 स्टार होटल के लिए साल का 12 करोड़ रुपया डीपीसी का चार्ज लेना शुरू कर दिया, जो कि हरियाणा में और यूपी में 50,000 से लेके 1 लाख तक है, जो 12 लाख रुपए हमारे 5 स्टार होटल में डाल दिया। तो इसको कोई देखना नहीं चाहता। रमेश जी, हम फिर ठीक है ना, मैं फिर बात करेंगे। हाँ, अभी जरा ये ठीक है। मुझे लगता है इसके बाद हम ये जो आपने कहा कि लोगों को एक साथ मिलके काम करना है, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो तब तक जरा वो ठीक है, खुल्लर साहब से पूछता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो प्रॉब्लम थी मैंने आपके सामने रखी है, बाकी खुल्लर जी हैं। जी, बहुत आपने एकदम शुरुआत ठीक किया है इस डिस्कशन का। सो यू नो संजय, यू हैव हर्ड डांग साहब talk about the various issues confronting. So you know, everyone thought that once COVID goes, once the restrictions end, there will be the catering business will be back to its old glory days. Are you back, or is it a difficult proposition like what Mr. Dang just painted out? I think Mr. Dang ने जो बोला है बड़ा दिल से और बड़ी सही चीज़ बोली कि the kind of situation the hospitality is going through during the pandemic, and now we are going and facing the after effects. These are the after effects which comes from us and from the clients both. So after pandemic, one thing has happened, that people and the client has become very, very intelligent, visionary, clear that how he can save money, not us. तो वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट वो है अब टेक्निकली, because the situation was so bad, people who had such huge money, the numbers have reduced tremendously. He was absolutely right कि जो 5,000 लोग थे अब वो 1,000 पे आ गए हैं और 500 पे आ गए हैं। ये कम क्यों हो रही है? ये मैं इसलिए कम हो, एक देखो दो चीज़ें, one is the kind of situation what everybody went through health wise, second the funding, the money, everybody went through a hard time, third in this 2 years लोगों को कम लोगों के साथ मज़ा ज़्यादा आने लग गया, so they enjoy a smaller gathering. What has happened, people realize कि अगर मैं 50 लाख रुपए एक वेन्यू को देता हूँ और एंटरटेनमेंट बुलाता हूँ, मेरा 2-2.5-3 करोड़ का खर्चा होता है। वो कहता है कि अगर मैं 200 आदमियों को बाहर ले जाता हूँ, जयपुर ले जाता हूँ, गोवा ले जाता हूँ, 1-1.5 करोड़ में उसका होटल सब क्लियर हो जाता है, एंड इज मोर हैप्पियर. सो आई थिंक सिचुएशन आफ्टर पेंडेमिक, आई वुड से दैट people have become more healthier. They don't want to eat too much oily food. Everybody says, masala come, oil come. These things are now coming openly. The health conscious people are becoming health conscious. People are becoming more clear that my budget is this much and I only inviting these many people. So I think what we should learn now to cater in a nicer way what actually Europe is doing today, a sit-down dinner. See, if you go to anywhere in London, there are banquet halls and everybody is sitting and they have a table like Lady Susan. They have 3-course menu. You have a soup, main course and dessert and tea, coffee. So I think प्यार से बिठा के खिलाना, एक थाली में आपकी अगर 6 आइटमें हैं, you are more happier. You are more close to a person by feeding them. I think this culture is supposed to come back at one point of time. I would say the bell bottom should come back. It will take time, but now I would say people should should see that there should be no wastage of food. Because what happens when we cook for 1,000 people, 500 people just is right, चाट खाए, fruit खाए, निकल गए. तो बाद में जो 2 बजे खाने को देख के वेस्ट, यू कैन नॉट इवन यूज दैट फूड. अगर उस खाने को आपने 5 घंटे में नहीं खाया, वो बेकार.
So ultimately, all our staff is becoming healthier. Why? And they're eating because there's nothing, it will go waste. So I think we should design good menus, limited menus, maybe sit down dinner in a way, and caterer can make 50% profit easily. If I'm giving a food in a thali with 5 items or 6 items, even I charge $1,000, I will make 400 rupees. Is niche catering the way forward with small Yes, groups? we should now get into the niche, clean, healthy, good food, प्यार से खिलाओ. आप 1000 आदमी आपके घूम रहे हैं, रामलीला की तरह हो रहा है, कोई आया गया पता नहीं चला, and people are scared of COVID still, whatever. बड़े गैदरिंग में जाना नहीं चाहते कोई अभी भी. Old people are still scared, so they are not getting out. People over 55, 60, they said, I'm happy home, मेरे को दाल चावल खिला दो, मैंने शादी में नहीं जाना. So बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, तो the things have reduced. I would say that everything can come back nicely. We can do less business, but we can do better profit. We can also tell the client, instead of paying 5,000, 4,000, you pay 2,000. But we'll give you limited khana, अच्छा खाना बिठा के खिलाएंगे. I think this culture should come in. This is what I feel should come back. Very important, very important. But Akshay, what you, is your reading of the market the same? Do you think, increasingly I think even clients are looking for these niche experiences. They don't want these big, the catering setups, What is your, view of this? So I'll tell you, like Sanjay ji mentioned right now, the after effects. As a catering company from the last, how the catering business has shaped, it was shaped to be a mass quantity business. We're still learning on how to be profitable in smaller gatherings. With that being said, demands are something that is very, very varied. Definitely we're seeing a trend in which quantities have reduced. That's primarily because people have seen how intimate weddings could also be fun. Over the last 2 years primarily. And that has sort of made a trend situation in which couples and young couples are now talking about, because they're also paying for their own weddings these days. They're talking about, why should I have strangers at my wedding? What value are they adding to my experience overall? So for now, yes, that a smaller gathering is perishing. There is a demand for that. But all of us, all the catering companies, eventually it is a business that works on volumes of economy and volumes of scale. So you don't want to change your business model, you want to still be volume-driven business? See, definitely, whether there are numbers, there's more profitability. But with that being said, smaller gatherings also, but it's just that how you've shaped your business to be in the last 20 years. Because Mr. Dang raised a very important point, and which was seconded by Mr. Khullar, that पैसे नहीं मिलते लोगों से, वो सब कुछ देने को तैयार है, पैसे नहीं. Sir, अब वही बात है that, if you're doing a gathering of say 200 people or 150 people, your costs, like your transport costs, don't go back in the same ratio as they would. If your quantity is reducing by say 50%, your costs are not going to reduce by 50%. For example, if there are 3 tandoors required for 300 people, it's not that 100 में एक तंदूर में काम हो जाएगा. That's what I'm trying to tell you. तो वो जो कह रहे हैं जो minimum cost है वो तो रहेगा ही, वो तो और बदलेगा नहीं. तो so that's another challenge, How do you balance the this? bottom line of the costs are not going to come down equally with the ratios coming down. Right. So that's where, the last 2 years, business has gotten back. This November, December seems to be rocking. But again, we're battling with much lower quantities. So that plays an important role, because your number of covers overall, off-season management is very important for that. So, like what point you have raised, I think the chef can now come in, because the challenge that you've heard, all the 3 people, and I think I see a problem that, okay, it may look very nice that we go for niche catering, smaller number of packs, smaller number of dishes,
that may be a solution. But as Akshay just said, your basic costs remain the same. So how do you balance this, mass versus niche? The whole dichotomy that is now arisen. Suresh, me being the chef and the CEO of Caesar's Catering, what we are seeing in the market right now is there's not that hue and cry which actually we are thinking of. The kind of market, the way they are responding is, for example, you are charging 100 rupees for a party of 100 packs. Now, if there's a party of 50 packs, we are asking for 200 rupees. And to be very frank, people are willing to pay. So, and Mr. Khullar being so modest, he said that there should be smaller menus and things. But what actually happens is, if somebody wants to get their daughter married, they call the chef and they say, please show the menu. And believe you me, they choose like they choose saris, no? So they want the menu. Okay, this is my wife wants to have this kind of a pizza, and my daughter wants to have this kind of a salad. Abhishek, member of the family chooses and new cuisine. And suddenly somebody who has flown away from some place, do you have some pomelo salad? Now I'll ask him, do you know the cost of pomelo? So can you have grapefruit? We don't want oranges. अबे बहुत फर्क है दाम के अंदर. So when a chef goes to sell it, and being a chef-run company now, we are very clear onto one thing. We say, okay, you want 50 items for 30 people? My 50 items cater to 300 people. I'll charge you for 300 people. You want to feed 10 people? That's your choice. And when you present good food, the service is good. And if we are planned according to that, okay, it might be 50 people, I'm charging for 300 people, I'm going to give a service for 100 people, and the things are coming back. So this is what we are trying to follow. We are not sticking to per plate and कितने लोग आए कितने लोग गए. मेरा तो सीधा सा है जी, मैं तो ये मेन्यू है, इसका ये प्राइस है, आपके 100 लोग हैं, आपके 150 लोग हैं, I don't care. So this is how we are managing it. A menu-driven pricing policy, Yes. Interesting. That's so many different business models are emerging out of this conversation. Also, but what about if again last year I remember everyone was talking about these small home catering. That someone has say 24, 30 packs at home. Do you think that's still a business? I mean, during COVID times it may have made sense. Does it make sense today? No, it makes. Now today I'm catering for 3 parties, 25, 30 and 35 people kind of. And menus are small, but these are elite people, elite clients. But again the thing is that if it is for 30 people, when they come onto these snacks, they want 10 snacks. Now I know that not a person can eat more than 5 or 6 pieces of that, what they want to have. Now what has happened is that the presentation has gone miles. Now if we are serving prawns, earlier it used to go into a kind of a tray. Now it is being served on a stone, which is a heated stone, and it is having lot of herbs which is put on to. So a kind of that person who wants to eat first, they want to talk to that prawn. Oh, you look so smart. So the presentation has gone very high. People want to have these smaller caterings, and the people who want to have the smaller caterings, they're not worried about money. Because the market which was being with us, the same market is there. The numbers have increased, but not their pockets. वो जो बड़ी शादियाँ और बड़े जो events हैं, उसके अंदर definitely there are budget constraints that people feel like, but not in the smaller ones. But the small, what you're saying, the elite dinners and lunches, they've become a viable business proposition for you. Yes. Because earlier you wouldn't touch them. You'd go for these 5,000 packs, the wedding events, But अभी आप अगर कोई जाए आपके पास आए कि मैं 30 लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप करेंगे? हम पूछते हैं डेट क्या है? पर उसका डेट क्या है? डेट खाली है तो मैं 5 लोग का भी करूँगा. डेट और रेट दोनों इम्पोर्टेंट है. ओके, सो डांग साहब, तो आप बताओ, आपने सुना, अच्छा एक होटल के लिए आपको पैक्स चाहिए, आपको लोग चाहिए, 20 लोगों का डिनर तो आप कर नहीं सकते हो. आप कर सकते हो अगर चाहते हो, तो पर इसका कोई सोल्यूशन निकला कि अभी कोई 5,000 लोगों की शादी चली गई है, वो जमाना चला गया, 1,000 लोग भी कोई इनवाइट नहीं करता आजकल. तो अभी आप इस हालात में कैसे अपना प्रॉफिटेबिलिटी संभालोगे?
जैसे बैंक्वेटिंग को कहते थे पहले, बैंक्वेटिंग था ड्राइवर F&B बिजनेस का, वो कब तक अभी भी ड्राइवर है F&B बिजनेस का, कि अभी आपको फिर नया मॉडल कोई ढूंढना पड़ेगा? देखिए, जो हम 5 स्टार होटल की बात जैसे हम कर रहे हैं, आपने जैसे बोला, तो हमने अपने जो होटल का, आपने शायद देखा नहीं हुआ हमारा होटल, हमने होटल का जो मॉडल बनाया है उसमें 20 पीपल से लेके 1000 पीपल तक के इसमें बैंक्वेट हॉल हैं उसके अंदर। तो जिस वजह से आज हम अपने आप को बचा पाए, सेव कर पाए, क्योंकि आज का जो टाइम आया है, जिस मर्जी गैदरिंग का जो भी फंक्शन आए या छोटे कोई भी आएगा, कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा ही। हमारे खर्चे पूरे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक के खर्चे पूरे आते हैं, स्टाफ के खर्चे पूरे आते हैं। आपको पता ही है, स्टाफ हर साल 5 से 10% स्टाफ का खर्चा बढ़ जाता है। तो वैसे तो अगर पिछले 4 महीने से हम अगर देखें, अगर पैंडेमिक के बाद, तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अगले 2-3 महीने बिजनेस कम है, लेकिन नवंबर के बाद इस बिजनेस में बड़ा अच्छा उठाव आ रहा है काम का। एक्चुअली मैं जो पहले केटरिंग की बात कर रहा था, जिसमें 500 से अबव के लोगों के फंक्शन होते थे, 5,000 के भी होते थे फंक्शन। हम एक बिलिंग 30 लाख से लेके 50 लाख, 1 करोड़ की बिलिंग लेते थे एक फंक्शन की। वो वाला टाइम तो चला गया। वो लोग आज डेस्टिनेशन मैरिज की तरफ चले गए हैं, जैसे खुल्लर जी ने बताया, क्योंकि आज लोग जो 1 करोड़ पे शादी में खर्च करना है, वो कहते हैं मैं गोवा चला जाऊं, मैं बैंकॉक चला जाऊं, मैं दुबई चला जाऊं, मैं जयपुर चला जाऊं, 200-300 लोगों को लेके चला जाऊं, और फैमिली के लोगों ने एंजॉय करना होता है। बाकी तो फॉर्मेलिटी के लिए लोग आते हैं, तो उनकी सोच अपनी जगह बेटर है। लेकिन हम लोगों ने जो इतने बड़े सेटअप बनाए हुए थे, वो आज मुश्किल में आ गए सारे के सारे सेटअप, इस वजह से। वो सेटअप तो आपको चलाना है, आप जैसे कह रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो देना ही है ना, पानी का भी बिल देना है, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सैलरीज देने हैं। लेकिन मैं जो आने वाला टाइम आपको बता रहा हूँ, वो डेस्टिनेशन मैरिज की तरफ आप दिल्ली NCR में ही अच्छे सेटअप बना सकते हो विद रूम के साथ में। तो लोगों का जो एंजॉय, जो जाना है, बैंकॉक जाना है या दुबई जाना है या आसपास कहीं भी जाना है, आपने जयपुर जाना है, तो दिल्ली के नज़दीक अगर आप सेटअप बनाते हैं, तो आप अपने आप को फिर दोबारा सेव कर सकते हो। नहीं तो आज दिल्ली में बड़े बड़े, इससे पहले जो सेशन थी होटेलियर्स के साथ, तो वो कह रहे थे कि हम दिल्ली को डेस्टिनेशन बना देने चाहते, वो बस वो ग्रेटर नोएडा की बात कह रहे थे। जैसे मुरादाबाद से लोग आते हैं हमारे यहाँ शादी करवाने, या आगरा से आते हैं, तो उसी तरह दिल्ली को क्यों नहीं डेस्टिनेशन बनाते? दिल्ली का डेस्टिनेशन तो बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको डेस्टिनेशन नहीं बना हुआ। जो भी होटल चला रहा है, आज हम भी होटल चला रहे हैं, तो महीने में 6 से 7 डेस्टिनेशन मैरिज की तरह ही फंक्शन आते हैं। हमारे पास 105 रूम की प्रॉपर्टी है, लेकिन 3000 लोगों की गैदरिंग के जगह बनी हुई है, रेस्टोरेंट वगैरह, बार वगैरह सब कुछ बने हुए हैं हमारे पास। लोग आते हैं बाहर से, वो जो दिल्ली में आना चाहते हैं वो बाहर से आते हैं। दिल्ली वाले भी लोकल, आजकल क्या है कि हर आदमी को रूम चाहिए, 20 रूम चाहिए, 30 रूम चाहिए, 50 रूम चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन क्या है कि जो दिल्ली वाला जो फंक्शन, जो पैसे खर्च करने वाले लोग थे, वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं। बाहर से लोगों को आदत नहीं है ज़्यादा पैसे खर्च करने की। आप बाहर से, अब यूपी से, मुरादाबाद से आना है या कहीं से आना है, उनको आदत नहीं है कि 1 करोड़ शादी पे खर्च करना है, 50 लाख खर्च करना है या 30 लाख खर्च करना है। उनको ऐसी आदत नहीं है सिस्टम में। चाहे पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन खर्च करने की उनको है ही नहीं। दिल्ली में लोगों को एक दूसरे को देख के फंक्शन पे पैसा बहुत खर्च करने की आदत थी, जो कि अब चली गई, दिल्ली से बाहर चले गए। वो चीज़ों को हम यहाँ पर कोई नई प्लानिंग लेके आते हैं, उस प्लानिंग से लोगों को रोक सकते हैं। हालांकि लोग रुकते जा रहे हैं अब, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं रोक पाए जितना रोकना चाहिए। इसके लिए नई प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी, इसके लिए नई R&D करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल। Akshay, you raised a very important point, of off-season management. Can you talk about, because as Mr. Dang also was saying कि ये जो अगले जो 2-3 महीने हैं, वो off-season हो गया आपके लिए. So how do you manage this off-season? So that was one thing that we got out of pandemic. जब हमारे पास the staff, we were operating on a lean structure, we learnt a way to do catering. We figured out a way in which, with a leaner structure, we can still manage things. That taught us. Additionally, what I spoke about last time was that we were trying to add more revenue centers.
We started with another brands that were looking at additional sources of incomes during these lean months. Say July, August, September, these are lean months. So practically you don't have much business during this time. So you're also focusing at house caterings and you're focusing at your delivery business. Delivery business is something that a lot of caterers really explored during the pandemic and during the lockdown. We talked about delivery last time, and people Yes. were talking about the Yes. breads and the, like Varun Tuni was here, he was talking about the sourdough bread how's the delivery business going now? It's good because we're not on, most caterers who launched their delivery businesses, we're not on platforms, we're not Zomato, Swiggy dependent. It's primarily our own PR and our returning clients that we're catering to, and we're not catering at that let's sell a single plate of paneer masala. What we're personally doing is we're selling packs of minimum 7 people. So it's primarily looking at smaller gatherings. Okay, just that we're cooking food and we're sending packages home. So it is a much cost-effective model. Even if we do a catering for 20 people, it doesn't cost less than 90,000 rupees regardless. So that's not cost-effective and cost-friendly to people, whereas this is it's a better model to the pocket. So, this has generated enough revenue to us to at least generate some amount and take care of some of our expenses, a fraction of our expenses during off-season. So off-season management is something that we're very seriously looking at, and it's in the last 2 years it's done well for us. We've been much, our books have been less negative than it normally was. Good, that's good news. That's what you want to see at the end of the year. Absolutely. Sanjay ji, if you were to sum up our discussion and, if we were to talk about what are the takeaways, do you think it is time that the catering industry, started coming together, as a body and becoming a little more vocal about its demands and aspirations? And, do you think there is a need for a professional organization? That's one thing. Second, also that going forward, what will be the best business model to follow? I think during the pandemic, the good thing happened, the catering association was made. And we all became good friends. That's one good thing happened. How many members are there? We have about more than 50 or 60 people. Good. Most of the catering guys are a member of our association. We have one group where we are making our problems, and we are also registered association. We are also putting do's and don'ts and policies for every catering, like Dang Saab said, ki payment needs to be taken before, certain things needs to be done. So I think slowly it was a most unorganized sector. But now slowly things are getting better. He being a president of the Banqueting Association of Delhi NCR, I'm holding a president position for the Catering Association. We are trying, we had enough time during pandemic, now everybody is a bit busy, but we are in touch with each other. We are thinking of doing how to save our industry, how to make sure it's organized, how we should make it more beneficial for the clients and more beneficial for us. I think we need to work on that, which we are trying to do whatever best we can do. I think European model will come in after some time during 2-3 years. You will see the smaller catering will be happening, but the price will go up. The hygiene factor, we will take care of it nicely, whether it's a mask, whether it's gloves, whether it's whatever way. We need to get this very clear to our clients that catering is going to be more hygienic, as good as a restaurant, which was not there. But we are now working on that to make sure that we go on the right path. So, talking about off-season management, running your association will be part of your off-season management work. This is what happened in the off-season, that we are part of the association, and slowly I think
we will be working on things which is better for us and better for the clients. Good. I mean, that's nice. And, it's great to hear all of you. And I hope this industry gets an organization. It's too much of a disorganized and unorganized industry. But we depend so much on it. All our good occasions are, dependent on your work. Whereas from a birthday party, first birthday party, to a marriage party, to a marriage anniversary, everything we turn to your industry. So thank you for your time, and hope to meet you again at IHE, the 6th edition of IHE next year. Because Sanjay is a very important member of the organization of this lovely show. Dang sab, thank you, धन्यवाद आप आए, अभी आते रहिए हमारे पिछले साल से आपके बेटे आए थे, वो मुझे याद है, और अक्षय भी थे. पिछले साल हमारा काफ़ी यंग पैनल था, पर और पिछले लोग जो बोल रहे थे, अभी आज इस बार मुझे लगा कि जरा और रियलिटी पे लोग, पिछले बार जरा एम्बिशियस बातें कर रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे, पर धीरे धीरे अभी सबको रियलिटी समझ आ गई है. पर सबसे बड़ी रियलिटी है कि लोग बदल गए हैं और लोग अभी पैसे देने नहीं चाहते. चलो, anyway, thank you. We'll meet next year, and till then, hope your organization will do even better and bigger and grow bigger. Thank you very much. Radhika? Where is Radhika? Listen, I don't want to deny you. Your lovely plaques will be... Radhika, you're in demand. Yes. Thank you for the wonderful session. Sanjay sir, of course, part of our family, and we are happy that you're with us. May I please request Anil sir to come on stage and present the mementos. Chef Abhishek Mishra. Sanjay Khullar sir. Mr. Akshay Khurana. And Mr. Ramesh Dang. Thank you so much for joining us for the session today. May I please request the panelists, we'll have a short video bite from you. My colleague Ansh will do the honors. Please stay for the video bite.